हेलो बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। टुडे वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स? इन फ्लूइड मैकेनिक्स, flux means to flow. When water comes out of the pipe and a ring is kept normal to the direction of flow of water, then we see maximum quantity of water will flow through it. In the same manner, if a surface is kept perpendicular to an electric field, then maximum number of electric line of force will pass through it. We can say here the electric field can be quantitatively described by using the concept of electric flux. In this diagram, the direction of surface is represented by area vector and a normal drawn delta S in outward direction. So, direction of electric field intensity and direction of normal drawn both are parallel to each other. We can say both are in same direction. So, maximum number of line pass through this surface. Another diagram here. In this diagram, the direction of surface or normal and a direction of electric field are perpendicular to each other and no line of force passing through them. In non-uniform field, we can say here direction of electric field E and a normal drawn on the surface delta S makes angle theta. So, in the component of electric field E in the direction of delta S is E cos theta. So, electric flux phi is equal to E delta S cos theta. इसका मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर बोथ वेक्टर क्वांटिटी हैं और टू वेक्टर क्वांटिटी जब कोई एंगल बनाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट से अपन एक्सप्रेस करते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए और जो इसका रिजल्ट आएगा वो है फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू ए सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरी सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है। इन यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस of area S perpendicular to the field lines, the electric flux through the surface is phi equal to E into S. Suppose the surface is not perpendicular to the field lines, then the electric flux through the surface phi is equal to Es cos theta. Here in this case we consider here delta S and E make angle theta, then flux phi is equal to E ds cos theta or E delta S cos theta, where theta is the angle between the direction of electric field E and the outward drawn normal to the surface. We consider here case first, when the normal is perpendicular to the electric field E. In this case, normal is
perpendicular to the electric field E make angle theta is equal to 90 degree. So flux phi is equal to ES cos 90, you know cos 90 is equal to 0, then flux is 0. The electric flux crossing the surface is 0. Case 2, when the normal is parallel to the electric field, then theta is equal to 0 degree and phi is equal to ES cos 0, cos 0 value 1, then phi is equal to ES. The electric flux crossing the surface is maximum. Unit of electric flux, phi is equal to E into S, means electric field intensity into area of the surface. Phi is equal to न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एस मतलब एरिया मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. इन एसआई सिस्टम अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू ए एस, बट फाई इक्वल टू ई का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, पहले पढ़ के आए हैं. हियर एफ एम एल टी माइनस 2 एंड चार्ज ए टी एंड एरिया एल स्क्वायर. सो डायमेंशन फॉर्मूला फाई इक्वल टू एम एल थ्री ए माइनस 1 टी माइनस 3. व्हाट इज क्लोज सरफेस? गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए हमें कुछ ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी होगी. क्लोज सरफेस, ए क्लोज सरफेस इज ए सरफेस वेयर वी कैन नॉट मूव फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड विदाउट पासिंग थ्रू द सरफेस. नेक्स्ट, गॉसियन सरफेस. व्हाट इज गॉसियन सरफेस? एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रॉन अराउंड ए चार्ज इज कॉल्ड ए गॉसियन सरफेस. प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस. It is an imaginary closed surface. Number 2, it never touches the charge. And third, the surface can have any arbitrary shape. And fourth, the Gaussian surface is cylindrical for a line charge distribution and cylindrical charge distribution. But Gaussian surface is spherical for a point charge and a spherical charge distributions. The Gauss theorem. What is Gauss theorem? The Gauss theorem states that the total electric flux through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Then total electric flux is equal to 1 upon epsilon naught into net charge, that phi is equal to q upon epsilon naught. Here we can say phi is equal to surface integral of closed surface E dot ds is equal to q upon epsilon naught. Proof. Consider a charge plus q placed at point O in the space. Let P be a point at a distance r from O. यहाँ हमने स्पेस में कोई पॉइंट चार्ज क्यों लिया है? सराउंडिंग जो सरफेस होगा, जो स्फीयर होगा, गॉसियन सरफेस होगा, ये स्फेरिकल सरफेस होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा. इस गॉसियन सरफेस को हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट. एट पॉइंट P, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, and its direction is along O to P. Let us consider a spherical surface with center O and R as its radius. This surface is called Gaussian surface. The field E is directed along the normal to the surface.
So angle between E and ds is 0. In this diagram you can see here direction of outward normal ds and E both are parallel to each other and make angle theta is equal to 0 degree. In this case, electric flux E dot ds is equal to E ds cos theta and theta is equal to 0 degree. So E ds cos 0 and E ds is equal to E into ds. So total electric flux surface integral of E dot ds is equal to E into surface integral of ds. Put the value E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square surface integral of ds. Then phi is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into ds. ये क्या होगा? ds total area of the Gaussian surface 4 pi r square. So we put the value here 4 pi r square and 4 pi here cancel, r square cancel, and result is phi is equal to q upon epsilon naught. Deduction of Coulomb's law from Gauss theorem, very important. Let P be a point at distance r from the point charge kept at O. स्पेस में हमने पॉइंट चार्ज लिया, डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट P लिया और P से पास आउट करता हुआ हमने गॉसियन सरफेस बनाया. इस गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल पार्ट्स लिया जहाँ पर नॉर्मल रन किया ds. इस केस द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज ऑफ रेडियस r with a point charge as center. The electric field E is parallel to ds. Total flux phi is equal to surface integral E dot ds is equal to q upon epsilon naught. ये definition है. So phi is equal to surface integral E ds cos 0 and phi is equal to E ds is equal to q upon epsilon naught. Gauss theorem, you know, phi is equal to q upon epsilon naught. So E into surface integral of ds is equal to q upon epsilon naught. E into surface integral of ds means whole area of the Gaussian surface 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught, and electric field intensity at point P is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. This is the electric field intensity at point P. Suppose a charge q naught means test charge is placed at point P. Then force on charge test q naught, force on charge q naught means force जो test charge में apply होता है, F is equal to q naught into E, and F is equal to q naught, put the value E 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, and F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught upon r square. This is Coulomb's law, which we have deduced from Gauss's law. Thank you.